Good evening, ladies and gentlemen. Let me welcome all my viewers once again today on Beyond Sugar. In the month of March, we observe the World Kidney Day, not only in India but globally. And we have been bringing to you a lot of information related to good kidney health. In last 1 month, we have done series of program also to help you understand that how can you identify the signs and symptoms of kidney disease, what's the importance of early detection. You've also learned things related to dialysis, that how it goes around and what kind of patients need that. So today we're going to talk about something which is very, very important, and we hear a lot of questions from you, there are a lot of comments in the chat, and today we have invited Dr. Vishal Saxena to talk about myths and facts about kidney transplant. So welcome to the show. Thank you very much, Sanjeev. Before And it's I always move a good forward, thing to come on this fora. yes, it's always good to host you as well, sir. And before I, start taking questions, which our viewers put, let me formally introduce Dr. Saxena to all of you. He's one of the noted nephrologists in our country, and quite a bit involved in patients with the kidney problems, and he's been helping them out for years together. After doing his graduation and masters in medicine from Banaras Hindu University way back in 2000, he proceeded for his super specialized training in the field of nephrology from Apollo Hospital in Delhi. And for last 18 years, he's been serving his patients. He's also done preceptorship programs from Barcelona on high risk kidney transplants. And in last 10-12 years only, he has been associated with successful kidney transplant of more than 1,000 patients, many publications and rewards to his credit. So we know that we're talking to an expert today who can answer all of our questions on this subject. So straight away, let me hand over the stage to you, and request you if you can share with the viewers that what is the relevance of World Kidney Day, what kind of programs you do or in the community it is done, and what's the purpose behind that. So basically, Sanjeev, World Kidney Day is celebrated on the second Thursday of March. And the idea is not to celebrate actually, the idea is to make people aware about the menace of kidney diseases the world is facing right now. And the problem is that, people are very well aware that if they have a left hand pain and if they have a chest pain, it's going to be a cardiac attack, and they will rush to emergency. But very few people know how the kidneys affect the lifestyle of the community, and not only in the perspective of medical profession but also as far as the finances and the healthcare burden that the kidney disease. So as we move away from infectious diseases, the world is moving towards non-communicable diseases. And by and large, if you see, the menace of kidney disease is almost 1 in 10 patient suffers from one or the other types of kidney disease. So that is the huge burden of kidney disease on the population, on people, and on the healthcare facilities in India and abroad. So that is why the reason World Kidney Day keeps on changing its themes every year. And this time it was allowing more accessible and equitable care to patients. So the reason being it's an expensive disease, and in India, people are caught early in life. We used to talk previously above 40 years, diabetes, blood pressure, kidney disease, heart disease. But in India, you're seeing a menace of people dying of non-communicable disease even at 20 years of age. Here and there, you keep on seeing on social media people dying of heart attacks, every other day. Young people dancing on floors, going on a meeting, doing a swimming and coming out and having a heart attack. So what is happening is that the lifestyle modifications, the environment, our genetics, our phenotypes, they all have led to an increase in the non-communicable diseases, and kidney is one of the most important disease, just secondary to cardiovascular diseases. So cardiovascular disease, more people die of kidney disease rather than malignancies. So that's where the kidneys become more important when it comes to avoiding non-communicable diseases. So today, I think I would like to take down questions about how to go about kidney diseases, how to able to cope up with kidney diseases. So these kind of things I would like to talk about today.
And as the question keeps on coming, I think we'll talk about what is the scenario of kidney diseases in India, the spectrum of transplant in India, because the most about transplant. So, kidney transplant, donation, recipient care. These are the questions that should be asked in the forum, in an open forum, in an open way, because there are lots of myths and facts that are related to kidney transplant. So, I thought this would be the day when I can add up a little of my knowledge that I have to the people and to our community about the myths and facts about kidney transplantations. Well, thank you for sharing with us that how relevant this day is. और जैसा कि आप सबने सुना, किडनी डिजीज का बर्डन जो है that's increasing unfortunately, and the best way to manage this situation is that we all are more aware about the disease, and then that will empower us to how to manage it also in a better way with the help of our doctors. Sir, since we're going to talk about kidney transplant today, and we have our viewers have heard about various aspects of it, including dialysis. Okay, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Aniket, am I audible to you? Okay, just allow us 1 minute. We're just checking. Uh, can you hear me, Dr. Vishal? Okay, so we have a little bit of an interruption. We apologize for this technical glitch. So we will just wait for a minute till the time Dr. Saxena is back. And I think in his opening remarks, he was very clear in telling to us that the burden of kidney disease is increasing because of various reasons. And we have heard earlier that there are 4 or 5 major reasons why kidney problem is arising in India. And one of the biggest reason for this is diabetes, as you would have heard in the earlier talks, then hypertension, uh, obesity, and then their aging factors. And some of these things put together will lead to the kidney disease. And then, there are various ways to manage it, including dialysis. So I can see Dr. Vishal is back. Can you hear us, sir, now? Yeah, yeah, I can hear you. That's wonderful to have you back. So, sir, let's begin with our audiences want to understand that we've all heard about kidney transplant, and then before that dialysis and multiple things. So, basically, at what stage of kidney disease transplant is required, or maybe to be more specific, who are the patients who may be recommended by you for a kidney transplant? So basically, there are 5 stages of chronic kidney disease.
And when a patient reaches stage 5 of chronic kidney disease, that is the time when we offer them kidney transplantation. So there is a term known as preemptive kidney transplantation, which when you go without dialysis and a stage of 4 5 of stage 4B, you can start talking to the patient about transplant, and he can go for a kidney transplant. So stage 4B to stage 5 is the stage where you offer them kidney transplant. And for a patient to undergo kidney transplantation, he should not be having very life-threatening diseases or something like active infections. So, like if somebody is having a malignancy, somebody having a severe cardiac disease, and he cannot be operated, or there is a risk of anesthesia, or somebody is having osteomyelitis or bone infection, or wound infection, or peripheral vascular disease like a when a patient reaches stage 5 chronic kidney disease, a patient is a potential candidate. He's got no active infection. He's not suffering from any life-threatening disease. He is the person who's offered a kidney transplantation. Of course, age, I mean, you can determine by the feasibility of transplant. If you can give 5 years of good life to any patient, even if he's a 70-year recipient and he has a will to live and he has a suitable family donor, you should offer kidney transplant to them. So age should not become a barrier or a hindrance to giving access to that patient. If he has a willing family donor and he has 5 years minimum, you can give him a quality life. Okay. So I think here Dr. Saxena helps us understand that at what stage of kidney disease a doctor will I think. recommend a transplant. So you can again rejoin. Okay. So can you, Aniket? I need your help. Okay. So today it Yeah. seems that we have A the bad Murphy's day. law applying All to my us. incoming calls are coming. So it No, goes, that's yeah. absolutely all right. We understand, sir. So he has helped us understand that what kind of patients will and what stage they will doctors will recommend a kidney transplant. Sir, now when doctors recommend kidney transplant, कई बार patients के मन में उनको when they're moving towards that condition, they're not aware कि किडनी ट्रांसप्लांट होगा कैसे, प्रोसेस क्या है उसकी. एंड वी वुड हैव हर्ड अबाउट कि cadaver transplantations happen, and then through family members it happens. So which is the most possible way, or happening way in India, the way it happens, and what's the process like? So if I tell you about the donation part, about the kidney donation, how you go about a kidney donation. So if you look at the reality in India, I'll tell you the statistics about Indian population. Almost 1,75,000 patients are in hemodialysis at present. There are 550 kidney transplant centers in India, and out of them, 11,705 kidney transplant were done in 2022. Out of these, 85 to 90% were live donations. So only 10% were the brain dead or disease donation program. So, Sanjeev, we have to differentiate between live donation and disease donation. So, what is live donation? Is we have a very, stringent Transplant Organ Act, which was framed in 1994, and its amendments have been happening till 2011, then 2020, and it keeps on changing. So, the donor criteria of a living donor is that the donor should be voluntary, related, family donor. A suitable family donor who's voluntary. So it's the most important word is voluntary, healthy, suitable family donor. So it gives a related. So it should be a related family donation when it comes to live donation. So initially it was only the eight things. So parents, siblings, so भाई बहन, माता पिता, बच्चे और पति पत्नी, ये 8 कैटेगरीज थी. उसके बाद जब अमेंडमेंट्स आए तो उसमें एक्सटेंडेड क्राइटेरिया में, जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड की फैमिली से हस्बैंड के पेरेंट्स,
हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर्स ये से दे सकते हैं, या वाइफ है, वाइफ के ब्रदर सिस्टर्स, वाइफ के वो नेफ्यू नीस, एक्सटेंडेड क्राइटेरिया आ गया, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए। तो ये सारे एक्सटेंडेड क्राइटेरिया में आ गए डोनर्स के। सो टू इंक्रीज द डोनर पूल, this is how the Human Transplant Organ Act started amending. But the relationship value is the most important value when you're doing a live donation. Remember that. So unless and until you prove the legality of the donation by proving it by a DNA match or a HLA, you cannot proceed for a kidney live donation. Okay. The matter goes to the committee, and the committee decides on the merits and demerits of the donor and the recipient, and accepts whether to go ahead for the kidney transplant or not, right? Then comes to the disease donation. So for a disease donation, one, there is a national organ transplant tissue transplant organization which is known as NOTO in India. So the patient, the criteria is the patient has to be a CKD5 patient on dialysis. So he is the one who can register in that NOTO criteria. And he registers only at one center. And this registry is uploaded every day. So this website of NOTO, according to the blood group, age, his previous transplants, basic kidney disease, heart tests. So all these are done every 6 monthly to reevaluate the patient again and again, whether he is a suitable candidate to be put on the tissue registry for disease donation. So brain dead donation जब की बात कर रहे हैं हम, तो वो पेशेंट जब जाता है किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता है, तो दिस ही कैन गेट एनी ऑफ द रजिस्टर्ड सेंटर्स। सो जरूरी नहीं है जहाँ डायलिसिस करा रहा हो वहीं पे वो अपने आप को रजिस्टर करे डोनेशन के लिए। ही कैन गो टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ही कैन गो टू एनी हॉस्पिटल विच इज डूइंग अ डिजीज डोनेशन प्रोग्राम। तो ये उसको देखना होता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप, द नोटो, it gives you certain points to every donor, and the lists keeps on updating. So every day when you have disease donation, your name may go up, may go down according to the blood and everything. You know, a lot of parameters are seen, and accordingly you receive a brain dead donation. So living donor criteria are very clear. The donor again has to be voluntary, fit, related. Remember, for disease donation, you have to be registered under the NOTO guidance, and accordingly, the NOTO will provide donation. Suppose two kidneys are there. So one donation happens in the center where the brain dead patient is. The other by rotation goes to the other centers, and these centers then they are forwarded a list of people who have registered under NOTO. And then you call these. You normally call three patients for a one kidney, so that any of them who comes compatible with that donation, go forward with the disease donation program. Okay, I think this is very helpful. और डॉक्टर सक्सेना ने बताया हमें clearly, like one is the family donation pathway, that how it can be done, and second is that how do you register for yourself in the government registry, and then if some kidney is available, and then that can be brought for the patient. So when it comes to आपने बताया कि जो family line pathway से जो donations है, and then it has to be approved, and you told about all the family members. So who approves that? Is it some government committee is there, or your hospital has its own committee with some specific members? So, how legal is that, and how quickly the process happens over there? So the Human Organ Transplant Act has very clearly decided about how to go about live kidney donation. So what you do is that there are certain set of papers of the recipient and the donors, and then you also do, suppose there's husband wife. Now, husband and wife are not related by blood. I mean, they are not genetically related. So, how do you prove that they're related? One is if they have a child. So, you can do an HLA with the child of the donor and the recipient, the husband wife. If the HLA matches with the child, you can prove that they are husband wife. So, this is one way of doing it. Then there's a DNA fingerprinting. Again, that can be done to show that they are legally they are relatives, and they are able to donate to their family members. Suppose there is an uncle or aunt who wants to donate. So suppose it's a mama, maternal uncle. So what you can do is, if the recipient is a nephew, so nephew का HLA mother से और mother का अपने भाई से, you can match and you can see that they are genetically related. By DNA fingerprinting, you can almost do five generations. You can trace up to five generations. So it's become very like scientific to prove and disprove whether you are genetically related to somebody or not.
Okay, so which means that the laws are very clear. Dr. Saxena has explained us both the processes that कि कैसे kidney transplant हो सकती है. So I think there we have a full clarity. So now moving forward, now there are a lot of questions which people have in mind when it comes to kidney transplant. And first of all, they it's like that how successful is a kidney transplant. So what is the survivability rate, and for how many years someone would be able to reap benefits for that. Can you help us understand with your experience, vast experience on this? So I think the survival of kidney transplant, it depends on the universal healthcare programs. Most important, accessibility to kidney transplant, the kind of transplant centers you have to preempt or remove the financial constraints if there are. And if you look at the statistics in India, the if you look at the live donation, the 5 year graft survival, I'm talking about the kidney survival, I'm not talking about the patient survival. The 5 year graft survival in India is almost 70%, and 10 year survival is 67%. So that is the 5 year kidney survival. I'm not talking about the patient survival. Patient continues to live more than the graft, because even if the graft, the kidney fails, अगर आपका transplant fail भी हो जा सकता है, होता है किसी भी कारण से, तो you can go back on dialysis and survive again on dialysis as you were doing before transplant, right? So I'm talking about the kidney जो transplant हुई उसका survival. एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बड़ा कॉमन है जब ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते हैं कि मेरी किडनी कितने साल चलेगी. तो उसका सवाल हम ये देते हैं कि देर इज समथिंग नोन एज हाफ लाइफ. तो मतलब अगर आज मैं 100 ट्रांसप्लांट करता हूं तो उसमें से 50% ट्रांसप्लांट विल वर्क फॉर 12 years. द अदर 50% will may work less than 12 years or more than 12 years. So average half life span of a kidney transplant is 12 years. That is known as the half life of kidney transplantation. So which means that so that's a good number. So 12 years is a large span of years. और दूसरा आपने बताया कि करीब 70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें किडनी विल सर्वाइव 10 years or more. And I think that's a very very encouraging statistics to feel confident about that kidney transplants are highly successful in our country. Sir, there is another question related to it, that the whole process of getting kidney transplant and then maintaining this whole thing is very very it's expensive and prohibitive to a common man. So can you help us understand the cost dynamics to it, and maybe if you can help us both in the public sector how much it may have, and in the corporate sector how much it may, and how do we take it forward on this understanding? So basically, what happens is, Sanjeev, one question that I previously missed was when you asked me how does the committee and who authorizes Yeah. the donation. So I think I should come to this question first because it's a very relevant question you have asked. तो जो कमिटी होती है, when you do a minimum number of suppose 25 to 30 transplant, there is an internal committee and there's an external committee. So when it comes to first degree relatives, normally internal committee takes charge, and people who are there in are medical superintendents, faculties of the hospital, and they are the ones who look after the legalities of the paper and the situation of the donor recipient, and they can go ahead. For all international programs or all second degree relatives, you have to go to the external committee. And remember, I'm telling you very, very authentically, the nephrologists and the transplant surgeons are not at all involved in this process. It is the work of the transplant coordinator and the committee members to decide the merits and demerits of accepting or rejecting a kidney transplant. So the nephrologists and the urologists, they don't even know. Like people like me don't even know who are the members who sit in the committee. They might be lawyers. They may be judges of the Supreme Court, past or present. They may be people who are doing noble professions. They may be priests. They may be fathers of the churches. They may be social workers. They may be government servants of high rank. So these are the people who look at the merits and demerits, who look at the financial disparities between the recipient donor, who look at the emotional and the social aspect of the donor recipient, and they are the ones who take away whether the patient has to be accepted, the donation has to be accepted or rejected.
सो लॉट ऑफ टाइम ये मिथ होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट जो था वो इन्वॉल्व था, या जो ट्रांसप्लांट सर्जन था वो इन्वॉल्व था, उनका कोई रोल ही नहीं होता इसमें. इवन व्हेन ब्रेन डेड डोनेशन हैपेंस, वी आर नॉट सपोज टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर ऑल्सो. हमें तो डोनर की रिपोर्ट्स आती हैं, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डोनर की आइडेंटिटी क्या है. टू बी ऑनेस्ट, एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट वी आर नॉट सपोज टू नो व्हाट्स फ्रॉम विच हु वाज द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर. सो वी डोंट नो इट ऑल दिस. तो ये सब जो ये सब बातें जो कई बार उठती हैं, एवरी 2-3 मंथ में अखबार में कुछ खबर आती है, कुछ आ जाती है. मतलब I cannot say it, but I can very well say about that it's a very streamlined laws where how the committee goes about it. Committee may reject it. DNA match के बाद भी committee कई बार reject कर देती है if there is a lot of financial disparity between a donor and a recipient. So, and we cannot question because we don't know who these people are who have been rejected. So if you have such a suppose somebody comes अब वो कहता है मेरे चाचा का बेटा है who is DNA proven, why can't he give it to me? So we send it to the Nirman Bhavan where there's a committee, and that jurisdiction has the Nirman Bhavan has the jurisdiction, and they can on the merits and demerits of the position, and they can give a go ahead. If it goes ahead, it's okay. Then is a donation known as altruistic donation, जहाँ पे आप रिलेटेड नहीं होते हो लेकिन कहते हो इमोशनली यू आर रिलेटेड. और सपोज किसी ने किसी बच्चे को या किसी को पाला 10 साल की उम्र से, and then that person suffers a kidney failure at suppose 40 years of age. So वो बच्चा बड़ा होके 25 साल का हो गया and he wants to donate out of love and affection. Now we are no one to decide whether there is a love and affection or whether it's something other than that. So these cases, we can put up these cases in front of the committee. The committee may reject it, or if the donor is like he's a well-read donor, persistent, and the recipient is well-read, and they have a good amount of social standing in the society, they can go to the court and get a they can file their case before the court. If the court gives a permission, we take these cases for transplantation. So either you have to go for court in these cases, or you have to go to Nirman Bhavan, which has the jurisdiction to allow these kind of altruistic donations, where they decide on the merits and demerits of donation, whether to accept this patient for a transplant. But the nephrologist and the transplant surgeon do not have the right to reject or accept a patient. They may have a right to reject, but they do not have the right to accept these kind of donations. Okay, all right. So I think here Dr. Saxena ने हमें help की understand करने में from the legal point of view, the emotional point of view, and how the decisions are taken. But I think one thing comes out very clear that kidney transplant is a very successful procedure now, which happens in India. More than 70% success rate is there, and legally it's very very streamlined. And I think he has provided us so much in-depth information, uh, which is so assuring. Sir, let's come to another question which I wanted to check with you was it is considered like it's very expensive and prohibitive to a common man. So is it really very expensive and can't be afforded by most people? What's the reality on this? See, there are two aspects of it. One is accessibility to kidney transplant, right? And the other that's a cost factor you are talking about. And other is Yes. availability of the donor in the family. So two factors that the whole kidney transplant plays go around. So when it comes to financial thing, in a normal private hospital, it would cost you something like 5 to 7 lakh rupees, including the donor and his wife. It may vary from center to center. It may depend on the how the package is made, whether you include induction, which is an injection, जो आप महंगा वाला injection देते हो to reduce the immunity of the recipient. So वो packages अलग अलग device होते हैं ना. Accordingly, the cost may vary. But इसको अगर मैं transplant करूँ dialysis versus transplant की cost में, तो आपके 2 साल का डायलिसिस की कॉस्ट will be recovered by transplant at the end of 2 year. 1 year of transplant is equal, one transplant is equivalent to 2 years of dialysis. लेकिन जिस दिन आप डायलिसिस बंद कर दोगे, यू विल बी बैक टू जीरो एंड यू विल लूज योर लाइफ. बट ट्रांसप्लांट अगर आपने करा लिया तो वन टाइम कॉस्ट पेमेंट डेफिनेटली है, बट आफ्टर दैट योर लाइफ योर 97% सक्सेस रेट है. 1 year success rate of transplant is 97%. 5 years is almost 80% and 85%, and 10 years is almost 67 to 70%. So if you look at the longevity and quality of life, definitely transplant offers you a better quality of life and is more cost effective, because एक साल के बाद आपकी transplant की medicines की cost
₹4-5 हज़ार टोटल रह जाती है, जबकि True. डायलिसिस की कॉस्ट पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 40-50,000 होती है. एंड दे आर So लॉट which means लॉट that या yeah, so he helps us understand that it's costing, so there is a cost attached to it. मगर जब आप उसका comparative analysis करते हैं कि एक dialysis पर continue रखे किसी को या फिर उसको transplant offer किया जाए, so it's very cost effective from that perspective. Sorry, and the quality of life also may be very very high as compared to a patient, undergoing dialysis versus getting a transplant done. Yeah, no, thank you for helping us, understand this perspective. Sir, we have talked about the recipient and how successful it is from the recipient point of view. What's the longevity of life? What about the donor? Now, what impact a kidney donation may have on the donor? Does his life expectancy or quality of life gets affected in any way? So normally, if I give an example to my donors, an average donor, there was a study done, and an average donor lives more than any of his counterparts of the same age group. एंड इट्स नॉट बिकॉज दे हैव डोनेटेड अ किडनी. वो इसलिए लंबा नहीं जीते क्योंकि उन्होंने किडनी डोनेट की है. वो इसलिए ज्यादा जीते हैं क्योंकि सपोज किसी ने 40 साल में किडनी डोनेट करी, तो 40 साल में उसके कम से कम 50 से 60 हजार 70 हजार के टेस्ट हो जाएंगे जो देखेंगे वो फिजिबल है किडनी डोनेशन के लिए नहीं. जो उसके एवरेज एज ग्रुप में उतने लोग को वो टेस्ट ही नहीं कराते. उसमें हार्ट की, किडनीज की, लिवर की, लंग्स की, हीमोग्लोबिन, आयरन, मतलब इतनी सारे टेस्ट हो जाते हैं उसमें कि आपकी बहुत सारी छुपी हुई बीमारियां भी निकल जाती हैं. एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम एज हेल्दी डोनर्स एंड व्हेन वी स्टार्ट इवैल्यूएटिंग देम, हमें उनमें कितनी कितनी छुपी हुई बीमारियां निकल आती हैं. कोई गायनिकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कराने को राजी, 40 साल से पहले कोई एंजियोग्राफी कराने को राजी नहीं, कोई हार्ट के डोबुटामिन टेस्ट को कराने को राजी नहीं है. बट जब आप डोनेशन के लिए आते हो सारे टेस्ट होते हैं. तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्पैन जो होगा नॉर्मल पीपल से ऑफ योर एज ग्रुप ज्यादा होगा. बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ किडनी डोनेशन, इट्स बिकॉज उस टाइम पे आपने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं. लेकिन वर्ल्ड वाइड ये भी देखा गया है कि अगर आप किडनी डोनर हैं तो 15 years ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग एट इज लेस देन 1%. तो 15 साल डोनेशन के बाद में किडनी डिस्फंक्शन होने का आपको जो रिस्क है या क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का रिस्क है वो लेस देन 1% है. डेफिनेटली है रिस्क, लेकिन इट्स लेस देन 1%. दैट्स अ वर्ल्ड वाइड डेटा. ऑफ कोर्स फॉर यंग एंड फॉर ब्लैक मैन इट मे बी हायर. So in an African American population, it may be a bit higher, but and for younger patient it may be higher. But otherwise, if you have a good lifestyle, you quit smoking and alcohol, you lead a healthy lifestyle, आपका एक किडनी से आप पूरा जीवन उधार सकते हैं. और 10 हजार में संजीव एक आदमी तो एक ही किडनी के साथ पैदा होता है, तो उसको तो पता ही नहीं होता. हम में से कितने लोग हैं जो यूनिवर्सली अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं? मुझे नहीं लगता कोई 25-30 साल से पहले या 35 साल से पहले कोई अल्ट्रासाउंड भी कराता होगा. वो भी कभी किसी को दर्द उठ गया तो अल्ट्रासाउंड करा लिया. वो तो बाय गॉड्स ग्रेस आजकल तो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो पेरेंट्स को पता लग जाता है बच्चों की 2 किडनियां हैं. पर हमारे टाइम में तो सब अल्ट्रासाउंड होते ही नहीं थे. तो तो नॉर्मली 10 साल, अगर 10 हजार में एक आदमी एक किडनी के साथ पैदा हो रहा है उसको नहीं पता है, इसका मतलब वन किडनी इज गुड इनफ टू सस्टेन योर लाइफ. Hmm. Okay. बट So, which means डोनेशन के that a साथ donor कुछ रिस्क is. है. Hmm. Okay. So, would you like to elaborate those? या सो इफ समबडी हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, तो उसको थोड़ा अपना और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है ना? देखो डोनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स नॉट दैट मैंने डोनेट कर दिया बट मेरा काम तो खत्म हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. डोनर इज सुप्रीम. डोनर को आप हमेशा एक नेक्स्ट टू गॉड मानते हो बिकॉज ही इज गिविंग अ लाइफ टू अ रेसिपिएंट. सो डोनर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन. मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि अगर डोनर सुरक्षित है तभी रेसिपिएंट की सुरक्षा देखी जा सकती है. आप एक बीमार को के लिए दूसरे किसी को बीमार नहीं कर सकते. दैट इज नॉट मेडिसिन एक्चुअली, राइट? सो डोनर सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन वी डू काउंसलिंग फॉर दिस डोनर्स ऑल्सो, हम ऑन कैमरा वी टेल देम द एसोसिएटेड रिस्क. देखो एक डोनेशन के टाइम पे एनी सर्जरी इज अ रिस्क. रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया है, रिस्क ऑफ सर्जरी है, आफ्टर इम्प्लीकेशन है. सपोज किसी को हर्निया हो जाए रिस्क डोनेशन के बाद में, जो नॉर्मली किसी सर्जरी के बाद में हो सकता है. किसी की फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, हो सकता है आज उसने 40 साल पे किडनी दी है तो 60 साल में उसको डायबिटीज हो जाए, उसको हार्ट डिजीज हो जाए. तो ये कॉमन लोगों में भी होते हैं, राइट? Okay. बट देन इट शुड नॉट बी रिलेटेड कि हमें ऑर्गन, हमने किडनी दी तो हमको
डायबिटीज हो गई, या हमने किडनी दी तो हमको ब्लड प्रेशर हो गया. इट शुड बी, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर दिस इज रिलेटेड टू किडनी डोनेशन और वेदर दिस इज नॉट रिलेटेड टू किडनी डोनेशन. तो ये बहुत जरूरी है डोनर के दिमाग में भी डालना और उसके परिवार के बारे में भी डालना. जैसे हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर वाइफ ने किडनी दे दी तो वो भी एक किडनी की हो गई, मैं भी एक किडनी का हो गया, तो हम दोनों की लाइफ तो खत्म हो गई. बट इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो. तो उसमें हमें दोनों को काउंसिल करना पड़ता है और दोनों को समझाना पड़ता है. एंड इफ यू फील दैट योर डोनर इज रिस्पॉन्सिबल एनफ, कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल है डोनर, वो समझदार है, तो देन यू कैन एक्सेप्ट दैट किडनी फ्रॉम द डोनर. Okay. I think again a very important perspective given here by Dr. Saxena. Just by giving a kidney, donating a kidney per se, it will not impact the longevity of life or quality of life. But then, as he mentioned that one needs to be aware about some of the basic issues like surgery में anesthesia में जो problem हो सकती है वो किसी को भी हो सकती है. And then he also highlighted one thing that at an early age if you go through so many screenings then अगर आपको कोई और disease अगर है और वो आपकी पकड़ में आ गई and if you are treating that disease from early age so it actually benefits the donor also in the long run. Sir, from now the recipient point of view, that there are, we see people who undergo transplant, they are on heavy dose immunosuppressants. They have to be, kept in isolation for long. So there is a general perception that even after receiving a kidney transplant, so one, gets very weak or, his lifestyle is inactive and is prone to infections. So, can you help us understand that is it so? And if it is, then for how much time, the care has to be taken, and after what time, a person can be fully active. सो डेफिनेटली आफ्टर ट्रांसप्लांट हम ऐसी दवाइयां देते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं. तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 to 6 months उन दवाइयों का असर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि डोज उनकी ज़्यादा होती है. सो फर्स्ट 3 months नॉर्मली वी से कि आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा बच के रहना है. घर में अगर बच्चे हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार है या बड़े भी हैं, आजकल वायरल जैसे चलता है, तो जिनको फ्लू आ रहा है, वायरल आ रहा है, तो उनसे थोड़ा बच के रहें. साफ खाना खाएं, हॉट फूड खाएं, मतलब रेडीली कुक्ड फूड खाएं, स्टेल फूड ना खाएं. घर में धोए हुए अच्छे से फल वो खाएं. अगर सैलेड खाने तो घर में अच्छे से साफ धुले हुए पानी से खाएं. पानी आजकल सभी लोग साफ पीते हैं, घर में किसी का एक्वागार्ड होता है, किसी का आरओ होता है, तो आजकल सब अच्छा पानी ही पीते हैं. तो खाना खाएं तो गर्म अच्छा खाएं. तो ये प्रिकॉशन नॉर्मली जो होते हैं हम नॉर्मली फर्स्ट 2-3 months के लिए बोलते हैं. आपने संजीव याद होगा कोविड टाइम में जब लोग एक दूसरे से दूर भागते थे और मास्क ग्लव सैनिटाइजर सबके हाथों में रहता था. इससे पहले ना ये सिर्फ ट्रांसप्लांट वालों के साथ होता था, तो दे यूज टू फील आइसोलेटेड कि हम तो ग्लव लगा के ऐसा लगता है दुनिया में हम अकेले हैं. जो कहीं जाते हैं तो मुंह पे ग्लव लगा के जाते हैं या हाथों पे ग्लव लगा के आते हैं, मुंह पे मास्क लगा के जाते हैं, किसी को छूते नहीं है. सो दैट यूज टू बी अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग. बट कोविड ने सबको सिखा दिया कि आइसोलेशन का अपना एक वैल्यू है, राइट. सो इफ यू हैव अ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पोस्ट ट्रांसप्लांट स्पेशली फर्स्ट 2-3 months, देन धीरे धीरे हम उनके जो लिमिटेशंस हैं उनको कम करते आते हैं. हम ये नहीं कहते कि पेशेंट को आइसोलेट करो, हम ये नहीं कहते शीशे का कमरा बना दो, उसके पीछे से उसको हाय हेलो करते रहो, या एक एक छोटी सी खिड़की से उसको खाना अंदर भेज दो, पानी अंदर भेज दो, हवा भी ना जाने दो. नहीं, ही हैज टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, उसकी उसकी कंपैटिबिलिटी इंप्रूव हो, उसकी अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव हो, उसका उसका कमाने की जरिया जो है वो बैक टू वर्क आ जाए. तो द होल पर्पस ऑफ ट्रांसप्लांट इज टू गिव अ क्वालिटी लाइफ एंड अ लॉन्जेविटी. वो तभी आएगी जब वो वापस अपने काम पर जाएगा, वापस अगर ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में जाएगा. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं शुरू के 2-1 महीने 3 महीने के लिए होते हैं. उसके बाद हम धीरे धीरे उनको बताना शुरू करते हैं. हाँ, क्योंकि जैसे जैसे दवाइयाँ कम होती है, रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, हाँ लाइफ लॉन्ग कुछ चीज़ें आपको जरूर करनी पड़ेंगी. अब आप ठेले का अगर गोलगप्पा पापड़ी खाना चाहेंगे, या कहीं पे रॉ गंदी सी जगह पे आइसक्रीम खाना चाहेंगे या रॉ सैलेड खाना चाहेंगे, तो वो तो किसी को भी डायरिया हो जाएगा. लेकिन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को खास तौर पे क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो दे कैच इन्फेक्शन अर्लियर देन अदर पीपल. सो साफ सफाई का ख्याल तो सारी उम्र रखना चाहिए उनको. और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हवा में होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस होता है, बीके वायरस होता है, ये हम सब में है. अगर आप और मैं भी अपना सीएमवी आईजीजी टेस्ट कराएंगे हम सब पॉजिटिव निकलेंगे. लेकिन इनमें ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन. तो हम लोग बहुत जल्दी से इम्यूनोसप्रेशन को आजकल टेलर करते हैं. सो जैसे जैसे हमारी ट्रांसप्लांट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, हम दवाइयों को बहुत जल्दी कम करना शुरू कर देते हैं. तो बिल्कुल मिनिमल डोज पे ट्रांसप्लांट की रखते हैं.
एंड देन अब बाई चांस किसी को कोविड घर में हुआ तो उस पेशेंट को भी कोविड हो जाएगा, या अगर उसको घर में किसी को वायरल हो रहा है तो उसको भी होगा। तो वी टेल देम कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर किसी के घर में किसी में इन्फेक्शन है तब आप उससे थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, या थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाए, बस इतना ही है। उसके अलावा दे लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। आई हैव पीपल जब वो ओपीडी में वॉक इन करते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि वो ट्रांसप्लांट पेशेंट है या डोनर है, या वो मुझसे कोई मिलने आया हुआ कोई रिलेटिव है। मतलब दिस इज हाउ देयर लाइफ बिकम्स। All right. So I think it's a very strong statement he makes, that it's basically a transplant is done so that the patient comes back to the normal life and the quality of life is good. There are precautions, but then that is major precautions are for first 6 months only, 3 to 6 months, and after that you take normal precautions as anyone will take, and it's a good quality of life after that. So since we are running out of time, I'll just take one last question on this. There are a lot of emotional aspects and psychosocial aspects to the whole transplant. A person who's receiving an organ from someone, what kind of feelings he goes through, that I'm taking a body part from someone. A person who's donating, he also may have after feelings after donation. So do you come across such emotional or psychosocial issues as a nephrologist, and how do you handle that, and what's your guidance to people who are listening to this? आई थिंक यू आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रांसप्लांट में लोगों को पूछना चाहिए और डॉक्टर्स को बताना चाहिए। तो इसीलिए हमने प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो डोनर रेसिपिएंट दोनों का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाते हैं। हाउ अडेप्ट दे आर एट रिसीविंग द किडनीज एंड हाउ अडेप्ट दे आर एट गिविंग देयर किडनीज। ठीक है। तो एक तो साइको सोशल असेसमेंट जो होता है उस टाइम पे होता है। उसके बाद हम नॉर्मली व्हाट आई डू इज आई आस्क रेगुलरली द डोनर्स। जब भी आप रेसिपिएंट आता है हम नॉर्मली बोलते हैं आप डोनर को साथ ले आओ, स्पेशली जब कुछ टाइम निकल जाता है ट्रांसप्लांट का। तो एवरी 3 मंथ्स नॉर्मली आई फील कि मेरे को डोनर से एक बार मिलना चाहिए। तो आई एश्योर कि भाई रेसिपिएंट को मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपनी माता जी जो है भाई जो है उसको लेके आइए। तो उससे क्या होता है डॉक्टर पेशेंट कनेक्ट रहता है, फैमिली में डोनर रेसिपिएंट के बीच में एक हार्मनी रहती है। और एक जो लॉस होता है जैसे एक डोनर को एक नोशनल लॉस होता है कि मेरी किडनी चलेगी, और वो फिजिकल लॉस भी है, ऐसा नहीं है इट्स एन इमोशनल लॉस, इट्स अ फिजिकल लॉस। लेकिन डोनर ऑलवेज हैज टू बी मेड के आपने एक अंग दान किया है विच इज अ महादान। यू आर लेट्स टू गॉड, बट दैट डजंट मीन कि रेसिपिएंट जो है उस बोझ को तले दबा रहे। आई मीन अगेन देयर इज अनदर एस्पेक्ट, दैट्स व्हाई द ट्रांसप्लांट लॉ सेज वॉलंटरी फिट हेल्दी डोनर। सो वॉलंटरी जो वर्ड आता है ना, वॉलंटरी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसमें यह कि उसने मन से दी है किडनी, अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी जैसे अगर वाइफ्स आती हैं किडनी डोनेशन के लिए तो हम वाइफ्स के पेरेंट्स को या उनके ब्रदर्स को उनके सिबलिंग्स को बुलाते हैं कि आप बताओ कि आपकी बहन आपकी बेटी अपने हस्बैंड को किडनी दे या ना दे, सो दैट कोई सटल सा प्रेशर हो या कोई वो हो तो वो भी उस चीज पे निकल आए। तो दीज आर इनडायरेक्ट वेज ऑफ रिमूविंग द प्रेशर्स ऑन स्पेशली द विमेन, बिकॉज देर इज वी नो आवर सोसाइटी। तो कई बार इमोशनल एक वो भी चलता है बैकग्राउंड में। तो वी ट्राई टू प्रीएम्प्ट दैट प्रेशर कि उसको हटाया जाए। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन दोनों का होता है, एंड जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो दोनों के साथ अलग अलग बैठ के डिस्कस करती है। तो दोनों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से की जाती है, और उनके जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सेपरेटली डील किया जाता है। तो वी मीट देम सेपरेटली, वी डील देम, वी टेल देम द फिजिकल प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू फेस इफ एनी। देखो मैं जैसे मैंने कहा सर्जरी के बाद दर्द होगा, हो सकता है झुकने के लिए 4-6 हफ्ते मना कर दें, हैवी वर्क। यंग लड़के अगर दे रहे हैं 25-26 साल का, वो फुटबॉल भी खेलना चाहेगा, वो क्रिकेट भी खेलना चाहेगा। तो वी टेल देम कि 4-6 हफ्ते बाद यू कैन गो फॉर अ प्रोग्राम, और यू कैन प्ले स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी एस्पेक्ट जो होते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होते हैं डोनर रेसिपिएंट के, दोनों के देखने बहुत जरूरी होते हैं, एंड वी डू एड्रेस देम एट रेगुलर इंटरवल्स। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 3-3 महीने पे डोनर के टेस्ट करा के मुझे देखने हैं, बिकॉज डोनर को देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। Well, I think such an important information, and this question also you handled it, and told us like how do you manage such situations. Uh, I think for our viewers, a lot of these things they keep this in mind. People who undergo kidney transplant or who are undergoing dialysis, but उनके डॉक्टर ने उनको बताया होता है कि at some point in time, you may require a transplant, and they have all these questions in mind. But I'm sure that today's session and Dr. Saxena, the way he has explained
सब व्यूअर्स को इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझने का मौका मिला होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी वाइटल. We had some technical glitches in the beginning, but I think the information which has been provided by him, I think it takes care of everything, and it is such an enriching session. But before I say, goodbye and conclude this session, I'll also hand it back to you, just in case you'd like to summarize some of the important points around transplantation of kidney, or anything important which we have missed to emphasize today, and you still want to tell to our viewers. So I think, Sanjeev, I would like to summarize it by saying that kidney transplant is one of the best options for CKD patients who are on dialysis if they are suitable to accept a kidney. One. Number two, if they have a suitable voluntary fit family donor, they should go for a kidney transplant. Number three, as a society, we should come forward for brain dead donation. So we should pledge our organs. There is organ donation day. There is an organ donation drive. World Kidney Day, which disseminates information about kidney donation. बहुत सारे myths हैं kidney donation के बारे में जिसको हमें हटाना पड़ेगा. तो as a society, we need to come forward so that our society becomes more adept in donating kidneys. So we need to increase that. Look at Spain. Look at countries like Brazil. They have far ahead in disease donation as far as countries in Asian countries like Singapore, South Korea, or India. We lag, and that is because हमारे दिमाग में इतने वहम इतने हमारी because we are like multiple countries together. So because of heterogeneity in our population, हमारे myths बहुत सारे हैं. हमारे अंदर बहुत सारी मिथ्याएं भरी हुई हैं जिनके हमारे पास जवाब नहीं मिलता. तो अगर आपके आपके घर में कोई किडनी से पीड़ित है या सपोज यू वांट टू बी अ किडनी डोनर, आप किसी भी डॉक्टर से मिलें. ही विल गाइड यू थ्रू दैट. दे आर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, दे आर सोशल वर्कर्स who work in this field, and they will answer every question of yours. And organ donation drive को let us celebrate it as a festival. क्या करेंगे इस शरीर को ले जाकर? अगर अगर एक शरीर 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है तो उस शरीर को किसी के काम आने दे. और मेरे ख्याल से लास्ट में आई विल कंक्लूड बाय सेइंग के एक बड़ा फेमस गाना था कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार कि जीना इसी का नाम है. सो जिंदगी जो है अंगदान महादान. So we should disseminate this information. A will to live in a recipient and will to donate in a donor. Both will lead to a successful program. Of course, the government has to pitch in, the corporate sector has to pitch in to reduce the cost and the financial burden on the patients. But accessibility and equitable care should be provided to each and every citizen of India. That is, I think, the goal, and that is the goal which I think India is striving towards. So we need to improve adherence to therapy. We need to give access to kidney transplant to patients. We need to increase live and disease donations. We need to optimize the management of immunity. We need to optimize the infection controls, and we need to increase the sensitization of the public towards organ donation. That is the most sacrosanct question. कि अंग दान कीजिए. इट विल मतलब बहुत सारे हम लोग भगवान मंदिर पूजा पाठ सब अपने अपने ईष्ट देव को मानते हैं. हर धर्म के लोग अपने अपने मानते हैं. लेकिन अगर कोई अंग दान को भी एक दान मान ले तो आई थिंक दैट विल बी बेटर देन एनी फाइनेंशियल डोनेशन. बिकॉज वो एक दान अगर ब्रेन डेड का होता है तो वो 8 लोगों को एक जिंदगी प्रोवाइड करता है. Well, thank you, Dr. Saxena, for this passionate, urge also which you have made to everyone. और जैसा कि बताया डॉक्टर सक्सेना ने, एंड organ donation ki pledge, I think everyone should take. And he helped us understand that, come out of your myths. This is, one body of yours probably, can give life to 8 others, and leave the myths and do good for the society. और शायद जीना इसी का नाम है, जैसे उन्होंने बताया. आज का ये टॉपिक और आज का ये सेशन शायद पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा सेंसिटिव था. फ्रॉम द वेरी फैक्ट ऑफ इट दैट इट्स टॉकिंग अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. there are a lot of myths, and I think he has broken all the myths. And it's like, एक process understanding भी इस चीज की, नॉर्मल दवाई या डायलिसिस वाला काम नहीं है. ट्रांसप्लांट इसका एक पूरा एक प्रोसेस है, और कई बार हम सिर्फ उसी में फंसे रह जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं. और आई थिंक आज डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया उस पूरी प्रोसेस के बारे में भी, सिंप्लीफाई करके, so that we are all aware, and it can help us take that decision while we come at that stage. With this, I must thank you, sir, for coming today.
and sharing संजीव all एक this. बात और, जस्ट वन Ji, लास्ट थिंग बिफोर यू थैंक मी। yes, रेसिपेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो किडनी लेता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस किडनी डोनर को रिस्पेक्ट करे और उस किडनी को संभाल के रखे बाय एडहेरिंग टू प्रोटोकॉल्स। तो उसको अपना ख्याल रखना है, उसको अपनी दवाइयों के साथ एडहेरेंस रखनी है, बिकॉज इफ यू रिस्पेक्ट समबडीज किडनी यू विल टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। सो दैट इज वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल फॉर द रेसिपिएंट। डोनेशन की तो हमने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन किडनी ji. रेसिपिएंट्स को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, उस डोनर को और उस किडनी को। So very important. Thank you so very much, Dr. Saxena, for coming out today और अपनी सारी information हमसे share की. I must thank all my viewers who watched us live today or who would be watching this program later on as well. If you have anyone in your friends or family circle who has some kind of a kidney ailment, you can simply share the link of this program with them. और ये आज की डिस्कशन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है. And then, if you are listening to us, if you are in Delhi, North India, anywhere, and you need more information on this, you can meet Dr. Vishal Saxena. He is Director of Nephrology and Renal Transplant at BLK Max Hospital, Delhi. If you are somewhere far away from Delhi, meet your nearest nephrologist or doctor to gain more information on this without wasting any time. Thank you so very much, sir. Thank you so very much for your time. And thank you so much. Bye bye.